Hi friends, welcome to Acme Commerce Academy. In today's lecture, we are going to start with the sum number 4. कल हमने sum third किया था. Today we are going to start with sum number 4, sell of firm to a company, on your page number 2.17. You see, A, B and C are partners sharing profit and losses in the following ratios. C's share is 1/3 of A, and that of B's share is double than that of C. They decided to convert the business into X Limited. तो सी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, बट दे हैव सेड A, B and C. C का रेशियो है वो A का 1/3 है. So let us assume C share to be 1. So A का रेशियो कितना आएगा 3. And that of B is double than C. मतलब C का 1 है तो B का कितना होगा 2. तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आएगा 3:2:1. ठीक है, यहाँ समझ में क्या दिया? C शेयर इज 1/3 ऑफ A. तो अगर C का एज्यूम करते अपन तो C का मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू A's रेशियो, एंड देन B's रेशियो इज डबल देन C. तो अभी C का 1 है तो B का कितना होगा 2 होगा. सो तो रेशियो क्या आएगा 3:2:1. ओके, now they decided to convert their business into X Limited with the authorized capital of 6 lakhs divided into 45,000 equity shares of 10 each and 15,000 6% cumulative preference shares of rupees 10 each. X Limited took over the firm's business as on 31st March 2024, on which date the balance sheet of Messrs. A, B and C stood as under. See, capital accounts A, B and C 1,50,000, 1,60,000. Current accounts है A and C. A is loan and creditors. Assets में machinery, motor car, furniture, stock, debtors, bank. Current account B का 21,000. Now let us read the adjustment. The debtors are all good and are taken out by A, who also agreed to pay the creditors. So A ने debtor is taken over by A, taken over by the partner, and he also decided to pay the creditors. The company took over machinery at its book value, stock at an agreed value of 1,66,000, furniture at rupees 4,500, motor car at 16,000, and the bank balance. The value of goodwill of the firm was agreed at 40,000. The company also agreed to discharge A's loan by issue to him at par of 3,000 6% cumulative preference shares of 10 each and a cash payment of 10,000. The purchase consideration was discharged by X Limited by the issue of at par 30,000 equity shares of 10 each and balance in cash. You are required to prepare necessary ledger account to close the books of the firm. So first we will calculate purchase consideration. So पहले हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन. ओके, नाउ परचेज कंसिडरेशन. सी, कंपनी टुक ओवर मशीनरी एट इट्स बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू क्या है 65,000. सो मशीनरी 65,000. Stock at an agreed value of 1,66,000. Stock 1,66,000. Furniture 4,500. Furniture 4,500. Motor car 16,000. मोटर कार 16,000 एंड बैंक बैलेंस. बैंक है 86,000. बैंक बैलेंस 86,000. ओके, the value of goodwill of the firm was agreed at 40,000. So goodwill
40,000, right? So total 40, 126, 142, 146, 146, 211, 3,77,500. Less liabilities, nil. क्योंकि दो liability, एज लोन कंपनी इज गोइंग टू इश्यू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरी लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स, बट दैट इज टेकन ओवर बाय ए. सो कंपनी ने कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की है, तो नेट परचेज कंसिडरेशन आएगा 3,77,500. नाउ हाउ दिस परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड, सी नीचे दिया है उन्होंने. So 3,000, 6% cumulative preference shares, 8 rupees 10 each, 30,000, right? The 30,000 and a cash payment of 10. And cash payment of rupees 10,000. Okay. And issue of at par 30,000 equity shares of 10 each. So 30,000 equity shares of rupees 10 each. So 3 lakhs. So 3 plus 10, 310 and 30. So 340. Total purchase consideration कितना है? 377,500. Balance in cash. तो equity shares को उन्होंने cash payment किया. Cash payment 37,500. So 3,77,500. So cumulative preference shares are issued 3,000, 6% cumulative preference shares plus cash to discharge A's loan, A की लोन को डिस्चार्ज करने के लिए, और इक्विटी शेयर होल्डर को उन्होंने क्या दिया, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, so 3 lakhs plus balance in cash payment. Okay. Now let us start with the post. Okay. Now पहले start करेंगे with realization account. Now say realization account. First transfer all assets. So realization account debit. To अभी assets में क्या क्या है? Machinery, $65,000. To motor car 18,000. To furniture, all assets will be transferred at book value. So furniture 6,000. To stock 1,80,000. To debtors 52,000. To debtors 52,000. ओके, अभी यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया. So 65 plus 18, 83, 89, 269, 321 and 86, 4,07,000.
4,07,000. Now, okay. Next, liability. So by creditors की वैल्यू कितनी है? Creditors is 28,000. Okay. Now our next step is recording purchase consideration. तो हमारी क्या एंट्री आएगी? Purchase condition. Limited company account debit to realization. Now they have converted into X Limited. So by X Limited, 3,77,500. Okay. Now, see, debtors are all good and are taken over by A. A is taken over. So when assets are taken over by the partner, journal entry क्या आएगी? Partner's capital account debit to realization. So by A capital account, debtors, all good. So it is taken at book value. So debtors है 52,000. 52,000. Second effect, partner's capital account to realization account. Now partner's capital account के balances क्या है? पहले buy balance brought down. 150, 1,60,000. 150, 1,60,000. साथ में देखो करंट अकाउंट भी दिया है. करंट अकाउंट है, क्रेडिट में है तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के क्रेडिट में. लायबिलिटी में तो क्रेडिट में. बाय करंट अकाउंट A 29,750 और C 20,750. जबकि B का करंट अकाउंट एसेट में दिया है. So to current account 21,000. जब भी सब में करंट अकाउंट दिया होगा, we will transfer to capital account. A's loan is 40,000. A's loan account equity shares in X Limited account. Okay, now A का लोन है. A's loan is 40,000. Buy balance brought down 40,000. Now जो purchase consideration है उसकी second effect, X Limited account debit side to realization. $3,77,500. अब इसको डिस्चार्ज कैसे किया है? By issue of 3,000 cumulative preference shares
So by X limited account की credit side में आएगा by 6% cumulative preference shares account 30,000 and by 30,000 equity shares account 3 lakhs and by cash account बाकी का अमाउंट कैश में पे तो 377,500 minus so 47,500 बैंक में आएगा सेकेंड इफेक्ट to X limited account 47,500. Okay. Now at the same time A is also taken over creditors. So क्या entry आएगी? Realization account debit to partners capital account. So realization account debit to A's capital account. 28,000. Clear? Now we will find out realization profit or loss. $457,500 is credit set total. Now 457,500 minus 4,35,000. So 22,500. 22,500 is your realization profit. So this should be distributed to A, B and C in their profit sharing ratio. So A, B and C. A 22,500 into 3 upon 6 equal to 11,250. B का आएगा 22,500 into 2 upon 6 and C का 22,500 into 1 upon 6. Two threes are 6. 22,500 divided by 3. 7,500. So 7,500. और बैलेंस जो भी बचेगा it will be transferred to अभी इससे इसका रेशियो हाफ है ना तो 7,500 का हाफ 3,750. So two partners capital account A, B and C 22,500 A 11,250 B 7,500 and C 3,750. So your realization account closed. Now profit will be transferred to partners capital account. So by realization account 11,250, 7,500 and 3,750. Okay. Now what they have mentioned, the company also agreed to discharge A's loan by the issue to him at par of 3,006% cumulative preference shares of 10 each, right? So 3,006% cumulative preference shares किसको हमने दे दिया A को and balance in cash. So यहाँ पे आएगा जो 6% cumulative preference share capital account 30,000 or balance in cash, so to cash account. $40,000 A's loan account closed, right?
सेकेंड इफेक्ट, ये जो कैश हमने पे किया है उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे एक्चुअली कैश की जगह पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बाय एज लोन 10,000। Clear? Now 6% cumulative preference shares, यहाँ पे आएगा 2x लिमिटेड अकाउंट 30,000 सामने बाय एज लोन अकाउंट, क्योंकि हमने वो प्रेफरेंसेस किसको इश्यू कर दिए, ए को, सो ए का लोन अकाउंट नहीं हो गया। बराबर, now the equity shares issue की है of rupees 3 lakhs, उसकी एंट्री टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 3 lakhs, right? Now these 3 lakhs के जो शेयर्स है ये हम किस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द प्रोपोर्शन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लास्ट सम में दिया हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे एंट्री बाकी रहेगी बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर की एंट्री, creditor 28,000, it is taken over by A. So पहले हम लोग क्रेडिट और डेबिट बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। See now credit and debit, A, B and C. C A का क्रेडिट है 2,19,000, जबकि डेबिट है उसका 52,000। बी का क्रेडिट है 1,07,500 और डेबिट है 21,000। सी का है 3,500 और यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी 60,000 है ना, तो 84,500, सॉरी 84,500। सो इक्वल टू बी का 2,19,000 माइनस 52,000, इसका करंट अकाउंट कितना है, 29,250 है, 500, so 218,500, 52,000, so 166,500। B का क्रेडिट सेट 107,500 माइनस 21,000, so 86,500 और C का है 84,500। राइट, सो अभी यहाँ पे 2 0 निकाल देंगे। नाउ रेशियो 1665 is to 865 is to 845। अब इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 1665 डिवाइडेड बाय 5, 333 is to 865 divided by 5, so 173
इज टू 845 सी का है डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 169, राइट। सो ये हमारा रेशियो है 333 to 173 to 169. So now 3 lakhs into 333 plus 173 plus 169, 675. 3 lakhs into 333 divided by 675 equal to A को मिलेगा shares of 1,48,000. So by A capital account 1,48,000 3 lakhs into 173 divided by 675 equal to 76,889. By B capital account 76,888.88 तो 890 कर देते हैं, 890 और जो बैलेंस है वो C को मिल जाएगा. So 3 lakhs minus 1,48,000 minus 76,890, 75,110. 75,110. So by C capital account, so equity shares in X limited account, ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया. Okay. Now, this is second effect, partners capital account debit side. So to equity shares in X limited account, 1,48,000, 76,890 and 75,110. अब जो बैलेंस है ये हम किस में पे कर देंगे? इन कैश. अभी बी का देखो क्रेडिट साइड है 1,07,500 एंड सी का है 84,500. So 2,18,500, 1,07,500 and 84,500. अब जो भी डिफरेंस है वो हम उसको पेमेंट कर देंगे. सो टू बैंक अकाउंट तो 218500 माइनस ए का डेबिट साइड है 2 lakhs. सो 18,500 उसको कैश में. उसके बाद में 107,500 माइनस 21,000 माइनस 76,890 इक्वल टू 9610 कैश में पे कर देंगे. और 84,500 माइनस 75,110 इज इक्वल टू 1990. इसकी सेकंड इफेक्ट बैंक में. सो बाय ए कैपिटल अकाउंट $18,500 by B capital account $9,610 and by C capital account $9,390. Debit side bank column 47,500, credit side 47,500. बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया. सो ओके. सो नाउ बैलेंस शीट. सो पहले आएगा विल स्टार्ट विद शेयर कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल हमारे क्वेश्चन में पहले ही दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में.
45,000 equity shares of rupees 10 each. Four lakh 50,000. And 15,000, 6% cumulative preference shares of rupees 10 each. So 1,50,000 outer column 6 lakhs. बट ऑथोराइज कैपिटल भी हम कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में लेते नहीं है. Now issued and subscribed capital. Issued and subscribed capital 3 lakhs. Equity shares, sorry, 30,000 equity shares of rupees 10 each. So 3 lakhs. And 3,000, 6% cumulative preference shares of rupees 10 each. 30,000. Now assets, goodwill 40,000. Machinery 65,000. Stock 1,66,000. Furniture 4,500. And bank balance 38,500. Motor car 16,000. So 3,30,000 balance sheet tally. Clear? Yes. Now we have to pass opening journal entry. अब पास करना है अपने को opening journal entry in the books of X Limited. Now we have to pass opening entries in the books of X Limited. Now X Limited ने क्या किया? बिजनेस को परचेज किया. So business purchase account debit. Business purchase account debit to Messrs A, B, and C account. 3,77,000. Purchase consideration कितने का था? 377,500. वो फर्स्ट एंट्री हो गई. सेकेंड एंट्री, नाउ ए लिमिटेड हैज टेकन ओवर एसेट्स, तो एसेट की एंट्री. सो हमारी एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट. सी मशीनरी अकाउंट डेबिट 65,000. स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,66,000. Furniture account debit 1,50,000.
4,500. Motor car account debit. Motor car account debit 16,000. Bank account debit 86,000 and goodwill at 40,000. Two business purchase account. Business purchase account 3,77,500. Now third entry, how this purchase concession has been paid. So receiver component, so Messrs A, B and C account debit. How it is paid? By to 6% cumulative preference shares account credit 30,000 to equity share capital account 3 lakhs to bank account 47,500. Done? So the sum is over. So I hope, even the sum was lengthy, थोड़ा लंबा था sum, but I hope समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.